पिलाने आम जो प्रथम 22 पेज पीडीएफ जाइला से पीडीएफ अल्प किसी बाकी था जो आम डिस्कसन करते फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंडक्टिविटी से आम डिस्कसन करते नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विस्कोसिटी आयन आयन इंटरैक्शन आयन सॉल्वेंट इंटरैक्शन चार्ज ऑफ आयन साइज ऑफ आयन एटसेट्रा आ गोटे बाकी था से वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस with dilution the effect of dilution on conductance। अच्छा प्रथम कथा जे आमे सॉल्यूशन को डाइल्यूट कले सॉल्यूशन रे थिबा नंबर ऑफ आयन्स in solution increases से जो इलेक्ट्रोलाइट हो whether it is strong electrolyte or weak electrolyte but with dilution number of ions in solution increases so number of carriers of current increases therefore conductance increases but what about specific conductance kappa? We know specific conductance kappa is conductance of 1 centimeter cube solution एक सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन रो कंडक्टेंस रो वैल्यू को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोली कहा जाए। आमे जिते सॉल्यूशन टाकू डाइल्यूट कले केवल सॉल्यूशन रे बाहर वाटर ऐड करछंती जेतिक परिमाण रे इलेक्ट्रोलाइट से सॉल्यूशन रे थिला डाइल्यूशन करिवा पूर्वरु डाइल्यूशन करिवा परे मध्य सेतिक परिमाण रो इलेक्ट्रोलाइट सेथिरे अछि। तेबे डाइल्यूशन पूर्वरु यूनिट वॉल्यूम रे जेतिक नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन भितरे थिले बर्तमान डाइल्यूशन हवा द्वारा वाटर ऐड कर देवा द्वारा नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तेणु नंबर ऑफ आयन्स यूनिट वॉल्यूम रे नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज हेले नंबर ऑफ कैरियर्स ऑफ करंट डिक्रीज हला सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस kappa डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन रे स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हला। देन कम टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। We know equivalent conductance is equal to kappa into phi, where phi is the volume containing 1 gram equivalent of the electrolyte. Similarly, molar conductance lambda m is equal to kappa into phi, where phi is the volume containing 1 gram mole of the electrolyte. With dilution, as we have discussed, kappa decreases, and this is phi, where phi is the volume containing 1 gram equivalent of the electrolyte, or phi is the volume containing 1 gram mole of the electrolyte. Dilution करिवा द्वारा the value of phi increases, kappa decreases, the value of phi increases. Volume containing 1 gram equivalent or volume containing 1 gram mole आम जो डाइल्यूशन कर सॉल्यूशन रे जेतिकी वॉल्यूम प्रथमे थिला डाइल्यूशन करने द्वारा सॉल्यूशन रे वॉल्यूम बढ़िला तबे यूनिट वॉल्यूम रे फाइ हम कहते
वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट तेणु 1 ग्राम इक्विवेलेंट जितेबाला डाइल्यूशन पूर्व 1 ग्राम इक्विवेलेंट जी वॉल्यूम रे थिला बर्तमान डाइल्यूशन करने द्वारा 1 ग्राम वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट टोटल जिते आम धन्य जो 99 टाइम्स 100 टाइम्स डाइल्यूशन कले 99 सीसी वाटर आड करने तेणु बर्तमान 1 सीसी रे थिला 1 ग्राम इक्विवेलेंट 100 सीसी रे बर्तमान 1 ग्राम इक्विवेलेंट है वॉल्यूम 100 टाइम्स इंक्रीज है तेणु phi increases, kappa decreases, phi increases. Then what about equivalent conductance or molar conductance? Now, एठी हमें कहते the increase in the value of phi is more than compared to the decrease in the value of kappa specific conductance. Phi रो value kappa रो value तुलना रे अधिक परिमाण रे इंक्रीज है therefore equivalent conductance or molar conductance increases with dilution then another point जे आमे डाइल्यूशन करी सॉल्यूशन को 10 टाइम्स डाइल्यूशन कले 100 टाइम्स डाइल्यूशन कले एमिति जेतेबेले डाइल्यूशन इनफिनाइट हेगला बहुत परिमाण डाइल्यूशन करदेले सेतेबेले डाइल्यूशन जेतेबेले इनफिनाइट सेतेबेले सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन केते हेगला ना कंसंट्रेशन डाइल्यूशन जेतेबेले इनफिनाइट आडकू टेंड कला concentration of solution tends to 0 and at this point the equivalent conductance or molar conductance of the solution is called equivalent conductance at 0 concentration or infinite dilution, molar conductance at 0 concentration or at infinite dilution. When dilution is infinite, the concentration of the solution tends to 0 and at that point equivalent conductance or molar conductance is called equivalent conductance at 0 concentration or molar conductance at 0 concentration. Now let us discuss the variation of equivalent conductance or molar conductance. Variation of equivalent conductance or molar conductance with concentration. या पूर्व आम कहले जे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बा मोलार कंडक्टेंस रो वैल्यू डाइल्यूशन सहित इंक्रीज हुए although the value of kappa decreases but the value of phi, that is the value of the volume containing 1 gram equivalent or 1 gram mole of the electrolyte is very high. Therefore equivalent conductance or molar conductance increases, but the variation of equivalent conductance or molar conductance with concentration or with dilution for weak electrolyte and strong electrolyte is not same. Therefore you will consider separately. आमे एठी separately consider करिया जे strong electrolyte पाखरे equivalent conductance बा molar conductance dilution सहित किभଳି भाबरे वेरिएशन हुए एवं weak electrolyte पाखरे तार वेरिएशन केमिति. एठी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रे कहउछन हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टेंस increases slowly with dilution. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रो वैल्यू
तो मोलार कंडक्टेंस वैल्यू डाइल्यूशन रे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पाखरे स्लोली इंक्रीज हुए एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन called Debye-Hockel Onsager equation, that is lambda m is equal to lambda m0 minus b root c. That is lambda m varies linearly with square root of concentration. Lambda m varies linearly with square root of concentration. The plot of lambda m versus square root of concentration is a straight line with intercept. This is intercept, that is lambda m0, and the slope is minus b. Thus lambda m c decreases linearly with square root of concentration. Slope is minus b. When concentration c is equal to 0, the value of molar conductance this point is lambda m0. एवं सेटा आमे विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट पाई कंसीडर कले कौन पाइले ना एमतिका कर्वटे पाइथिबा पोटासियम क्लोराइड रे एमति पाइले KCl, strong electrolyte potassium chloride. It lambda mc is plotted against square root of concentration. एवं कौन ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पोटासियम क्लोराइड रे जो लाइन टा में पाई जो बाय प्लॉटिंग लैम्डा mc अगेंस्ट concentration square root of concentration से line seems to approach a limiting value, गोटे लिमिटिंग भैल्यू आड़ को टेंड कला भाई जना पड़ुछि एवं एई पॉइंट रे जतबे कंसंट्रेशन c 0 हो गला एठी आमे कहिले जे लैम्डा m c मोलार कंडक्टेंस approaches a limiting value and this limiting value is called molar conductance at zero concentration ने पाइचे बा यदि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नहीं थिबा ताको हम कहबा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट जीरो concentration. तेनु lambda mc decreases linearly with square root of concentration, and when concentration c is equal to 0, lambda mc approaches a limiting value and that value is called lambda m0, that is molar conductance at zero concentration. And this molar conductance at zero concentration can be obtained by extending the conductance curve. जो conductance curve हम पाइचंती ए conductance curve को zero concentration को extend कले हमें पाई परिवा जे molar conductance at zero concentration or infinite dilution. अच्छा, now come to the behavior of weak electrolyte. इटा में strong electrolyte behavior सुनिले जे केमती मोलार कंडक्टेंस बा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कंसंट्रेशन सहित वेरी करे. एंड नाउ लेट अस डिस्कस द वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. अच्छा, एठी कौन कहते हमें ना मोलार कंडक्टेंस increases sharply
sharply with dilution. Strong electrolyte पाखरे कही जे मोलार कंडक्टेंस इंक्रीजेस स्लोली एवं एठी मोलार कंडक्टेंस गोटे लिमिटिंग वैल्यू आड़ को अप्रोच कला जोटा कि आम कंडक्टेंस कर्व को जीरो कंसंट्रेशन को एक्सटेंड करी पाई पारे एमती का होता ये मुझे कहीदे जे एमती का कर्वटा पाई ताकू आम जीरो कंसंट्रेशन को एक्सटेंड करदे जीरो कंसंट्रेशन को एक्सटेंड करदे लैम्ब्डा एम सी तेणु दिस पॉइंट इज मोलार कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन बर्तमान एटी आम कौन कहते ना वीक इलेक्ट्रोलाइट पाखे मोलार कंडक्टेंस बा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन सहित शार्पली इंक्रीज करे किंतु डू नॉट अप्रोच ए लिमिटिंग वैल्यू एटी जमी गोटे लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच कला सेठी आउ लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच कला नहीं एंड द प्लॉट ऑफ लैम्ब्डा एम versus square root of concentration, the plot of lambda m c versus square root of concentration goes parallel to y axis. This is the conductance curve for acetic acid. एठी कौन है ना ये कंडक्टेंस कर्वटा y एक्सिस को एमती पैरेलल होकर चलला आमे आउ कंडक्टेंस कर्व को जीरो कंसंट्रेशन को एक्सटेंड करि पारले नाही देयरफॉर लैम्ब्डा m जीरो which can be obtained by extending the curve to zero concentration in case of strong electrolyte cannot be obtained by extending the curve to zero concentration as the concentration curve goes parallel to y axis जेहेतु y axis को parallel जाउची आमे आउ ताको जीरो concentration को एक्सटेंड करके पाई परिबा नाही एठी आमे ग्राफिकली पाई परथले एठी किंतु आमे ग्राफिकली पाइबा संभव नुहे अच्छा देन द रीजन फॉर सच बिहेवियर एमिति का बिहेवियर हैला कहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एमिति बिहेवियर देखेला बेले डाइल्यूशन रे एमिति बिहेवियर देखेला बेले वीक इलेक्ट्रोलाइट ए प्रकार बिहेवियर देखेला कहीं द रीजन होची जे गोटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट संपूर्ण भाव में आयोनाइज्ड एट एनी कंसंट्रेशन आम सॉल्यूशन टाको डाइल्यूशन करुचे डाइल्यूशन रे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रो आयोनाइजेशन प्रभावित हुए ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट संपूर्ण भाव में आयोनाइज हो जाइए जेकोसी कंसंट्रेशन रे किंतु एटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तेणु स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माने ये संपूर्ण भाव में आयोनाइज होगा केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन टा ही देखेले इट ऑलमोस्ट एक्जिस्ट एज बी प्लस एंड ए माइनस आयन तबे आम डाइल्यूशन रे नंबर ऑफ आयन्स बढ़िवार चांस आ नाही जेतिक नंबर ऑफ आयन्स प्रथमे थिला डाइल्यूशन करिया परे मध्य सॉल्यूशन रे सेतिक नंबर ऑफ आयन्स अछंती आयन्स रो संख्या बढ़ू नाही अतएव नंबर ऑफ कैरियर्स ऑफ करंट सॉल्यूशन रे बढ़ू नाही कैरियर्स ऑफ करंट रिमेन सेम ताले कोन हेतिबो ना जो अपोजिटली चार्ज आयन अछंती ए अपोजिटली चार्ज आयन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हेतिले एमानक भितरे आयन आयन इंटरैक्शन थिबो एवं डाइल्यूशन द्वारा ए आयन गुड़िक बेसी सेपरेटेड हो गले जहाँ द्वारा आयन आयन इंटरैक्शन आउ रहिला नाही जेतेबेले आयन आयन इंटरैक्शन रहिला नाही तेबे आयन गुड़िकर मोबिलिटी इनक्रीज है जहाँ द्वारा डाइल्यूशन रे कंडक्टेंस का वैल्यू इनक्रीज है सो द इनक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टेंस with dilution in case of strong electrolyte is due to the increase in mobility of the ions which is again due to less or decreased ion ion interaction
आयन आयन रो इंटराक्शन कमिबा जुगु आयन रो मोबिलिटी बढ़िबा जुगु स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पाखरे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बा मोलार कंडक्टेंस रो वैल्यू इंक्रीज हला डाइल्यूशन करबा द्वारा बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सही वीक इलेक्ट्रोलाइट नौ जोटा मैं ग्राफ रे करथिले एसिटिक एसिड प्लस वाटर आमे कहिसंती जे वीक इलेक्ट्रोलाइट रे देयर इज एन इक्विलिब्रियम तेणु ये एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन तेणु मुझे डाइल्यूशन कली more and more water is added to the solution, then according to Lee Chatelier principle the equilibrium shifts in the forward direction. So more number of ions are produced, so there are more numbers of carriers of current. So in total degree of ionization, degree of dissociation of the electrolyte increases and number of ions in solution, number of carriers of current in solution increases, therefore conductance increases sharply. Eti conductance sharply increase hela, eti slowly increase hela. Eti number of ions बढ़ु नांती, eti number of ions बढ़ुचंती. So there is a sharp increase in the value of equivalent conductance or molar conductance with dilution, and especially at infinite dilution there is a large increase in the equivalent or molar conductance, which is due to increase in number of ions in solution. Then the last point is equivalent conductance or molar conductance at zero concentration can be obtained graphically. एको आमे graphically पाई परचंती by extending the curve to zero concentration. This is the case in case of strong electrolyte, but in case of weak electrolyte, as the conductance curve goes parallel to y-axis, so equivalent conductance or molar conductance at zero concentration cannot be obtained graphically by extending the curve to zero concentration. एटा parallel हेकि जाउछि तेणु एको मु एक्सटेंड करि परिबनि, एटा एक्सटेंड करि होतला zero concentration को, एठी किंतु मु zero concentration को एक्सटेंड करि परिबि नाही. So strong electrolyte पाखरे equivalent conductance or molar conductance at zero concentration can be obtained graphically by simply extrapolation of the conductance curve to zero concentration. But in case of weak electrolyte, equivalent conductance or molar conductance at zero concentration cannot be obtained by extrapolation of the conductance curve to zero concentration. So this is the behavior of strong electrolyte and weak electrolyte, the behavior of equivalent conductance or molar conductance of strong electrolyte and weak electrolyte with dilution or with concentration. So पिला माने तुम पाखु प्रथम जो 22 पेज रो पीडीएफ जाइतिला, नोट रो पीडीएफ जो जाइतिला, से फर्स्ट पार्ट रो वर्तमान क्लास ऑनलाइन क्लास कंप्लीट हेगला. सो सेकंड पीडीएफ जो जाइए ताको स्टार्ट करिवा नेक्स्ट क्लास रे. थैंक यू.